Hello everyone, this is Nishant. Welcome on my channel. So I'm living in Germany. I make videos and I'm doing my bachelor's here in Technical University of Munich. But मैं आज आया हूँ अपने कुछ जर्मन दोस्तों के साथ में ऑस्ट्रिया घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पास मतलब 2 हफ्ते का वेकेशन है। तो हम लोगों का एक समर कैंप है जिसमें हम लोग आए हैं ऑस्ट्रिया और घूम रहे हैं। और उस कैंप के बारे में ऑफ माई 2 फ्रेंड्स दे विल लेट अस नो हाउ इज़ द summer camp and how about our church. So just listen, and if you also interested, so you can also join us and you can also have fun with us. That's true. Yeah. Well, I start with the summer camp. So right now we're on the summer camp. We are around 60 people and having a great time for 1 week here in Austria in the wonderful mountain landscape around us. And yes, we have a really nice location. We have a lot of possibilities for like different activities, kind of stuff like volleyball and also some climbing. So we have a lot of things here to do, and we are also enjoying the time together, like good conversations, and get to know a lot of new people who are coming the first time here, and this is great. We have a very good time down here in Austria. Yeah, and this is our leader who brought us here, so he's gonna tell us about our church. Yeah, so I want to invite you in our church. If it happens that you visit Germany, and actually if you visit Taiwan, I want to invite you in our church because we love God and we love people, and we love also international people. So we have a translation there. We have many possibilities where you can connect. We have our small groups, also an international small group. So if you ever come to Germany, visit us. It will be cool, and even if you are not really into faith or don't know anything about God, you are still invited. We love everyone, so feel free to come to our church. Yeah, thank you brother. Thank you Ilian. So of course कि आपको पता लग गया होगा कि क्योंकि चर्च का ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप क्रिश्चियन हो तभी आप चर्च में आ सकते हैं। आप चर्च में आए, आप लोगों से मिलें। जब आप जर्मनी आते हैं या किसी भी न्यू कंट्री में जाते हैं तो हम लोगों के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ी पढ़ाई करनी होती है और लोगों को जानना होता है, उनके कल्चर को जानना होता है। और जब हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया मौका रहता है हम लोगों के लिए कि हम दूसरे से मिलें, जानें और ऑफ कोर्स अपनी लाइफ को थोड़ा ईजी बनाएं और अपने नेटवर्क को थोड़ा क्रिएट करें। सो आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जाने वाला हूँ कुछ और प्लेसेस में घूमने के लिए, जो कि हम ऑस्ट्रिया में घूमने के लिए आए हैं, साल्ज़बर्ग के पास में। सो मैं आपको पूरी चीज़ें बड़े अच्छे से दिखाऊंगा और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वो सारी चीज़ें। अभी हम लगभग 4-5 दिन इधर रहेंगे, तो जितना हो सकेगा मैं आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अगेन। Yes, we didn't understand what you say, but this man is awesome. So leave a like, leave a comment. Thank you brother, thank you. Okay, bye bye. Nice. Bye. अभी हम जा रहे हैं हैगरजी, वो थोड़ा यहाँ से दूर है। हम लोग कार से जाएंगे और उसके बाद पहुँचने के बाद मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और पूरे जी दिखाता हूँ वो कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। सो लेट्स सी। और ये यार बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये रिवर और पूरा व्यू ना, ये ब्लैक फॉरेस्ट जैसा लग रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until
सो अभी मैं उधर से वो स्टार्टिंग पॉइंट से निकल के थोड़ा सा ऊपर चढ़ के इधर आ गए और ये पूरा राउंड लगा के ना हम पूरे फॉरेस्ट का राउंड लगा के और फिर ये लेक के चारों तरफ से होके फिर उधर ही पहुँचेंगे। इसके ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है और ये मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस है। मैं बहुत मज़ा आ रहा है, मैं देख भी रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग आगे भी चले गए। सो मैं जल्दी से उनके साथ जाता हूँ क्योंकि मैं पीछे रह जाऊँगा वरना तो, और जाके मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ कैसा कैसा है। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and सो हम लोगों ने एक पूरा राउंड वहाँ से लेके पूरा फॉरेस्ट से होके और पूरा ऐसे घूम के वापस ऐसे घूम के वापस फिर से हम इसी रास्ते से वापस आ गए। सो ये था यार हंटर लेक। सो अमेजिंग है, इट्स सो ब्यूटीफुल as you can also see. fade to gray as you fade away.